तो समस्ते लाइव क्लास रे जॉइन हो जातु। आज आम डिस्कसन करबा कि हमर अपकमिंग एग्जाम OTPC नर्सिंग ऑफिसर 2026 रा मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ विषय डिस्कसन करबा एवं जोटा हम प्रीवियस ईयर 2020 रे हेतिला गोटे एग्जाम और 2023 रे तो नंबर 1 जीवा में तो व्हाट इज द मीन बाय सिस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन ना ए रे कहला द प्रेशर विथ इन द आर्टरी ड्यूरिंग द डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल and the correct answer is amara the pressure within the artery during the contraction of the left ventricle. So option C is the correct answer. तो देखंतु मने करे एटा हला हमर हार्ट रो चैम्बर एटा होचे राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जेते बेले लेफ्ट हार्ट देखंतु ईसीजी एमती अच्छी है तो जोटा आमर पीक रे थिबो ताको आमे कोन कहबा हमर सिस्टोलिक एवं जहाँ मिनिमम रे थिबो ताको आमे कहबा डायस्टोलिक बुझिले देन जेते बेले हमर कोन सिस्टोलिक केते बेले सेते बेले हम हार्ट टा कंट्रैक्शन होची हार्ट टा हमर कोन ना हमर कंट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन को आमे कोन कहबा रिलैक्सेशन कहबा हमें डायस्टोलिक ठीक अछि हार्ट रिलैक्सेशन ए डायस्टोलिक सेति हमर कोन साउंड कहा जे लव आउट हैला डब ठीक अछि लव हैला कंट्रैक्शन एवं डब हैला हमर डायस्टोलिक साउंड Then question number next, which blood group is known as the universal donor? Universal donor के ना O, AB, A and V, and the correct answer is option O. O blood group is the universal donor. मने करो क्वेश्चन आसिला ठीक अछि एटा तो खाली O देछि पॉजिटिव बोल करी मने कर क्वेश्चन आसिला ऑप्शन रे अछि O पॉजिटिव O नेगेटिव AB पॉजिटिव एवं ए बी नेगेटिव ताहले आमे कोन चूज करबा ना यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ठीक अछि ए बी पॉजिटिव कोन ना ए बी पॉजिटिव हो हमर यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड द यूनिवर्सल डोनर इज हमर ओ नेगेटिव an universal recipient हमारा रेसिपिएंट होची AB पॉजिटिव देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following vitamin enhance blood factor blood clotting को फैक्टर ता मन इन्फ्लुएंस करि थाए हमरा ब्लड क्लॉटिंग में को विटामिन के बी सी और ए हम जान कोन विटामिन के इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कोन इन्फ्लुएंस करते हैं हमरा फैक्टर 2 फैक्टर 7 फैक्टर IX 9 एवं फैक्टर X हम फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग देन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन द ह्यूमन ब्लड इज अबाउट नॉर्मल WBC सॉरी नॉर्मल हमर कोन प्लेटलेट काउंट नॉर्मल प्लेटलेट काउंट ता केते तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हमर केते 1,50,000 रो
4,50,000 mm³ ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल केते ना इठी ऑप्शन रे केते अछि ना हमर ऑप्शन बी ही जेबा हमर करेक्ट आंसर। द स्टेरिलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन। आम जिते बेले स्टेरिलाइजेशन एंडोस्कोप को माध्यम करे ऑटोक्लेव करबा ना यूवी रे 2% फिनोल और 2% ग्लूटाराल्डिहाइड ना ऑलवेज एंडोस्कोप व्हिच इज sterilization by 2% glutaraldehyde. Then which urine sample is collect को टाइम रे हमें यूरिन कलेक्ट करबा फॉर कल्चर फर्स्ट टाइम लास्ट यूरिन मिड स्ट्रीम यूरिन और फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन कौन हम ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिड स्ट्रीम यूरिन सब बेले नामा कहीं ना आमर लेस चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन इन आमर यूरिन सैंपल। द नॉर्मल साइज ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस रो नॉर्मल साइज केते 7.5 2.5 into 1.5 5 to 1 1 per 0.5 10 2.5 7.5 5 and 2.5. The correct answer is हमारा 7.5 long 5 centimeter wide and 2.5 centimeter thickness. तो ऑप्शन डी ही जीवा हमारा correct answer. For effective sterilization steam is autoclave should be at a pressure of 15 pound per square inch for 30 minutes at the temperature of जदि हम स्टेरिलाइजेशन को ऑटोक्लेव रे 15 पाउंड पर स्क्वायर दोचे फॉर 30 मिनट पे ताले हम केते टेम्परेचर देबा 100 डिग्री 110 121 डिग्री और 131 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज 121 डिग्री सेल्सियस at 15 psi. Then next आसबा देखो ड्रग थ्रू मोस्ट सियोर 100% हमारा 2 मार्क क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। तो एठी कहला तो हमर कोन जेसिटा एक क्वेश्चन हमर रॉन्ग थिला तो हमर कोन डिजायर्ड डोज और ऑर्डर डोज केते हमर 0.5 mg हेबो ठीक अछि। बट अवेलेबल टैबलेट इन 1 mg तो हमें जानी छे A equal to available dose केते D by desired dose in hand। तो desired dose हमें जानते 0.5 by 1 ग्राम। तो लिखि परिबा 0.5 को केते 5 by 10 लिखिबा हरण अछि बोले गुणन 1 by 1 तो केते 5 गुणे 10 केते तो 1 by 2 1 by 2 माने 0.5 तो केते टैबलेट दरकार हमरो 0.5 टैबलेट जोटा क्वेश्चन 500 mg है जाटे हम ग्रेस मार्क आथिला तो कोन एटा हेबा 0.5 mg ड्रग इज ऑर्डर है। मन कर देखो आउटे ड्रग कैलकुलेशन करबा मन कर गुटे इंजेक्शन मन कर पांट जोटा हम पांट प्राइजर व्हिच इज ऑर्डर 100 mg बट आम पाखे एवेलेबल केते ना हमर 40 mg पर भाइल आसी थाए तो हमें केते देबा पेशेंट को डिजायर डोज बाय एच डिजायर डोज केते ना हमर 100 बाय केते 40 तो 4 को 4 कटिला 4 1 के 4 4 दूने 8 8 2 4 5 20
तो आम के देवा जेहेतु केते ना आमर 100 अच्छी एभेलेबल एवं केते 40 0 को 0 कटिला केते रहला 10/4 10/4 इक्वल टू 4 दूने 8 देन 4 पंचा को 20 तो केतेटा भाइल देवा आमे ना दुईटा भाइल आउटेर हाफ देवा ठीक अच्छे तो मूर्खामी हिसाब कले के 40 जेहेतु आमको 100 दरकार गोटे फाइल जब 100 आउटे भाइल के आउटे 40 40 40 के 80 जेहेतु 40 अच्छे 40 रहा के 20 तो के दुईटा भाइल अधा तो आमको से आम कौन पांटटा आम देवा पेसेंट को The nurse should aware which of the following medication is never given direct to intervention at the 𝙎𝙀 को इंजेक्शन नाम डायरेक्ट IV आम दे पारे दे पारे केते बेले ना डाइल्यूट करके दे पारा बट डायरेक्ट IV दे पारिबानी कोन कोन ना कैल्शियम ग्लूकोज डेक्सट्रोज 𝙧6 पोटासियम क्लोराइड एंड द करेक्ट आंसर इज हमर KCl होची हमर कोन ना हमर KCl पोटासियम क्लोराइड जदि हम जगह डायरेक्ट IV दे देबा तल पेशेंट कोन सडन हार्ट अटैक पळे आसबो ठीक अछि कार्डियक अरेस्ट के डेथ है तो सब बेले कोन हमर इन्फ्यूजन पंप रे चले ठीक अछि कि हम 1 NH रे हम डाइल्यूट करके बंद दे परिबा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी डिटेक्ट बाय बेंडिक टेस्ट इन यूरिन बेंडिक टेस्ट यूरिन हम कोन डिटेक्ट करि थाओ ना हमर यूरिन टेस्ट रे हम कोन सुगर प्रेजेंट अछि कि नाही बोली ठीक अछि तो एरे कोन देला प्रोटीन बाइल सॉल्ट ग्लूकोज कीटोन ना करेक्ट आंसर इज हमर ग्लूकोज देन नेक्स्ट कहला while measuring blood pressure in upper arm जेते बेले ब्लड प्रेशर मेजर करछन इन upper arm chest piece of the stethoscope is placed over the which of the following artery को आर्टरी रे हमें chest piece ता हमें एटा हला हमर कोन स्टेथोस्कोप तो स्टेथोस्कोप रो हमें को जगह रो हमें प्लेस करि थाओ चेस्ट पीस को नंबर अल्ना रेडियल ब्राकियल आर्टरी और हमर एक्सिलरी एंड द करेक्ट आंसर है हमर कोन ब्राकियल आर्टरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन एठी कहला फॉर व्हाट प्रोपोज पाराफिन बात हमें केते बडे यूज करबा नै गला बर्न rheumatoid arthritis abdominal distension or edema and the correct answer is केते बेले हमर rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis केते बेले करा है जेते बेले rheumatoid arthritis हम पाराफिन बात देबा केते बेले कोन है हमरो हीट थेरापी जोटा हमरो डीप हीट थेरापी फलरे हम कोन पेनटा रिड्यूस हेबो जा पर स्टिफनेस जो रहिता हमर जॉइंट रे ताहा हमर कोन हमर रिड्यूस हो जा पर पेन किछि हेबन सेटा मोस्ट प्रोबेबली हमर rheumatoid arthritis केस रे हमर पाराफिन बातटा दिया होय तो एंगल ऑफ सेरिन नीडल इंट्रामस्कुलर आईएम केते आईएम रो डिग्री होजी केते आप समझते जानते 90 डिग्री when a drug is to be given at bedtime which of the following code to be used ना SOS OD HS AC कोन ये बेड टाइम माने कोन HS ठीक अछि SOS माने जेते बेले व्हेन नीड OD माने 1 डे AC माने आफ्टर फूड What does catheter nature through a left sidal cardiac catheter जेते बेले हमें
कार्डियक कैथेटराइजेशन करिता आमे को आर्टरी आमे इंसर्ट करताओ ना एंटीक्यूबिटल रेडियल फीमोरल एवं फीमोरल वेन इन द करेक्ट आंसर इज हमरो फीमोरल आर्टरी द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्लड इन यूरिन का आमे कोन कहताओ आमे हेमाचुरिया then which of the following drug is cause expulsion of the gas from the intestinal tract ताको आमे कोन कहताओ laxative cathartic carminative and astringent and the correct answer is amara carminative option C is the correct answer then what is known as X-ray study of the fallopian tube X-ray study ame kono sonography cholecystoscopy myelography salpingography and the correct answer is amara salpingography is X-ray of the fallopian tubes. Then which color code nitrous oxide cylinder color coding amara asibo red black and white shoulder French blue or black and the correct answer is amara kon French blue is amara nitrous oxide and black body with white shoulder होची हमर कोन इटा होची हमर ऑक्सीजन at what time the sample should be collect from the patient with जदि मलेरिया पेशेंट छी ताले को टाइम रे हमें ब्लड collection करिवा फॉर करेक्ट वैल्यू जेते बेले नॉर्मल टेम्परेचर आफ्टर खाइला परे कि जस्ट स्टार्टेड कि एट द जेते बेले हाई फीवर थेबा केते बेले ना ना जेते बेले हाई फीवर थेबा सेते बेले हम कोन टू टेस्ट मलेरिया then कहला frozen DPT vaccine should be broad room temperature before use allow melt before use discard and shake thoroughly before use the correct answer is amra at kana jete bile frozen DPT vaccine should be kono ame kebe discard kori so B is the correct answer then कहला needle syringe scalpel इटा होची हमर कोन ना हमर BMW रो क्वेश्चन आछि तो needle syringe scalpel डिस्पोजेबल हम कोठी करबा जेते बेले हम सब साफ इंस्ट्रूमेंट needle syringe कोन ना हमर कोन ब्लू बैग रे हम डिस्कार्ड करबा जेहेतु हमर व्हाइट जदि देखता ना ताहले हमर व्हाइट हे जानता जेहेतु किछि नै ताहा हम ब्लू मार्क लिखि पारिबा एटा मध्ये कोन हमर ग्रेस मार्क आस्तिला 2020 देन करेक्ट मेथड ऑफ द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कोन हम जानते कैलकुलेट कोन करा होय हमर फर्स्ट डे केमति ना एलएमपी डेट रो प्लस केते 7 डे प्लस 9 मंथ तो 9 मंथ को कैलकुलेट करा होती केते ना हमर 280 डे तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंशन फेज प्लस 7 डे इन 280 डेज इसी कौन अच्छे ऑप्शन ना फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 28 प्लस 7 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर then 40 which position used in the laparoscopic sterilization in female should be placed in lithotomy left lateral supine knee chest position and the correct answer is हमर कोन lithotomy position ये इंस्ट्रूमेंट ना कोन हमर ना यूरोस्टार डायलेटर ट्रोक्लियर डायलेटर एनेजियम नीडल और नॉन ऑफ दीज न कोन एटा ये होची हमर कोन ट्रोक्लियर डायलेटर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन ईसीजी इंडिकेट ईसीजी कोन इंडिकेट करूची ना कंप्लीट हार्ट ब्लॉक सेकेंडरी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री
हार्ट ब्लॉक जिते भी आम ईसीजी देखुचे फास्ट हार्ट ब्लॉक पीक टी वेव देखो इटा कौन 43 आईवी सेट एटेरियल लाइन ब्लड सेट और सीवीपी लाइन देखो आम केमती आइडेंटिफाई जेहेतु आईवी सेट आम कौन ये गोटे देखो कौन जो फिल्टर जदि लगिला ताहले एटा मते रेड अच्छी निडिल पिंक कलर देखिए ताहले कौन हाँ बीटी सेट जेहेतु फिल्टर अच्छी देन आम ये सिंबल कौन ये सिंबल हूँ आम कौन रिसाइकिल यहाँ आम कौन करा ना 46 द टेस्ट डन इन द पिक्चर इज टू टेस्ट पोटेंशियम कौन को टेस्ट करा ना हमरा कौन ए बी जी इटा कौन ना हमर रेडियल आर्टरी से चेक करूछंती तो एबीजी को आम अदरवाइज कहा जाए कौन ना हमर एलेंस टेस्ट ठीक अच्छे एलेंस टेस्ट अदरवाइज कला जोटा कि आम एबीजी टेस्ट देन एटा को टैबलेट ना हमर एमडीटी मल्टी ड्रग थेरापी जोटा कि आम कौन लेप्रोसी पेशेंट को दिया हुए the next cord section of the shown in the photograph content umbilical cord पर कितना आर्टरी कितना वेन कितने आर्टरी 2 आर्टरी 1 वेन तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन एटा हमर को इंजेक्शन दे जदि एमते फुलिक रहल ता कोन बीसीजी ए टाइप रो ना कोन पे यूज होए ना हमरो न्यूट्रिशनल स्टाटस ठीक अच्छे जोटा कि हमर न्यूट्रिशनल ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर न्यूट्रिशनल स्टाटस चेक करबा पे हम कोन चेक कराई मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस हमरो चेक होई छै then which of the following is a common symptom of the lung cancer common symptom of lung cancer कोन ना हमर कफ क्रोनिक कफ ठीक अच्छे क्रोनिक कफ और चेंजेस इन ए क्रोनिक कफ होचे हमर लंग कैंसर साइन सिम्पटम रिस्क फैक्टर ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इनक्लूड को एज ग्रुप हमर कोन ब्रेस्ट कैंसर हेबार चांस हाईली थाए ना एट द एज ऑफ मेनोपॉज यंग एज एट द मेनार्की then 53 a child is admitted in the burn unit both upper extremity are burned then what is the total body surface हम केमती कैलकुलेट करिबा कोन दुईटा अपर एक्सट्रीमिटी दुईटा हाथ हमर पड़ी जाइए दुईटा हाथ केते इछे केते हमर 9% तो टोटल 9 प्लस 9 केते ना हमर 18% टोटल केते बॉडी सरफेस बने छी ना हमर 18 देन कह द आईवी फ्लूइड चॉइस इन द पेशेंट विथ सीवियर डिहाइड्रेशन हमें को फ्लूइड ता देबा ना कोन आरएल द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी द मेन फंक्शन कोन व्हिच इज रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑप्शन बी पहला कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन आर्टरी प्लस वेन ताको हमें कोन करबा ना हमें कैपिलारी आर्टरी प्लस वेन इक्वल टू हमर कैपिलारी characteristic of fracture skin in the dehydration patient include
तो कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ स्किन इन द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर जदि गोटे पेशेंट डिहाइड्रेशन देखा जाए ताहले हम फास्ट कोन देखा वार्म एंड ड्राई लॉस ऑफ इलास्टिसिटी पिगमेंटेड स्किन और बोथ ए एंड बी एंड द करेक्ट आंसर इज हमरो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी और डायरेक्ट बहुत लंबा ही जीवो टाइम ही जीवो सेति में स्पीड को एली साइन ऑफ द ग्लूकोमा ग्लूकोमा रो एली साइन होची हमर कोन ना हमरो कोन देखा जीवा ना हमरो हालोस अराउंड द लाइट then early sign of the glaucoma eta gala then method of just to remove earwax kono amaro worm with normal saline irrigation the most common site of occur in the peptic ulcer in stomach so most common site kono amaro pylori portion the Mr. Hari was complaining about his right hypochondriac region which is referred to the right hypochondriac region is pain tar kon refer kariba head thorax abdomen or upper limb and the correct answer is amra option C abdomen purpose of the traction kon mein use हुए used to treatment of fracture help in internal rotation it helps to reduce muscle spasm and contraction कोन नामटा both A and B used for treatment of fracture pain एवं help to muscle spasm एवं contraction pain use होता है then कहला the abnormal hardening bone in a elevation in the bone density is known as ताको हम कोन कहताओ नाम osteoporosis osteoporosis during the blood transfusion जदि किसी blood transfusion इटा होता hypersensitivity रो आसी wheezing skin become the flush with have their characteristic hemolytic reaction allergy transfusion reaction or कोन नामरो allergic reaction most common appropriate nursing intervention while treated as lacration of first treatment कोन monitor BP apply the pressure testing at heat elevate body part apply pressure on the dressing on ice pack so option C is the correct answer then question number 66 गोटे person seen in the rope take place is a snake this condition जदि गोटे person दौड़ी को देखि किसी कोन भाबिला ना इट इज स्नेक बोली भाबिला हल ताको हम कोन कहबा real stimuli present but this is not real कोन हम कहबा ताको कहबा हम illusion डिप्रेशन हालोजेशन केते बोली कहबा हालोजेशन जेते बेले रियल स्टिमुली किछि प्रेजेंट नथिबा ताको हम कोन कहबा ना हालोजेशन माने कोन किछि नथिबो से जगह रे से कहबा एठी साप अछि ताको हम कोन कहबा ना हमर हालोजेनेशन then hypotonic drug are used to treat hypotonic drug हम केते बेले यूज करे हुए हमर sleep disorder then first sensory perception which is the no basic in the reality is known as हमर कोन hallucination पहली first sensory perception which has no reality किछि no reality के मान no किछि stimuli present नथिल ताको हम कोन कहबा नाम hallucination then mania is characterized by कोन high self esteem during the assessment client schizophrenia level at the after the nurse take the blood pressure his action shows elevated somatic delusion worksheet and necrology कोन हबो So option B is the correct answer. High self esteem. During the assessment stage, schizophrenia, I can works flexibility. Bottle feeding
जदि पेसेंट को आम छुआ को बोतल पिंधा रिस्क कौन थी आम डायरिया होबार बहुत हाई चांसेस थाए देन द नर्स इज एवर एबाउट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग चाइल्ड विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस कौन एनालिसिस और एब्डोमिनल डिस्टेंशन और profuse diarrhea and the correct answer is profuse diarrhea. MMR means कौन ना आमर maternal mortality rate जदि गोटे बेबीर 1 year केते आमर वेट गेन होता है ना आमर 3 गुणा जेहेतु 3.5 केते हला 3.5 into 3.5 plus 3.5 तो केते 3 3 6 7 3 9 10.5 kg. The anatomical pair among the following quote amor BC TBD intradermal DPT partition subcutaneous MR rubella subcutaneous OPV polio oral कौन आमर DPT और partition is इटा आमर रंग अच्छे DPT आम कौन DPT देता आम कौन subcutaneous DPT आम देता कौन DPT रूट होचे IM एटी कौन कहला ना दिस इज सबक्यूटेनियस तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Then what is the best solid food that can be used during the process of weaning ना egg white rice cereal जिते बेले आमर weaning period आमर solid food कौन आमर rice cereal. Which baby are the higher risks have hypovolemia कौन आमर LBW birth weight बेबी केस कौन हाइपोथर्मिया आमर मोस्टली हाई रिस्क देखा जाए. Then which of the following conditions is commonly pregnant client in the second trimester of pregnancy? Mastitis, metabolic alkalosis, physiological anemia और respiratory acid कौन देखा जाता है मेनली आमर कौन physiological anemia देखा जाता है. Then the diet that is appropriate in normal pregnancy should be high in कौन आमर कौन प्रोटीन मिनरल्स एवं vitamin. Option D is the correct answer. Then placenta is the organ that provide exchange of nutrition and waste product between the mother and fetus. But this develop by केते को मंथ रे हमर डेवलप होते फर्स्ट मंथ थर्ड मंथ फिफ्थ एवं 7 मंथ एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड ट्राइमेस्टर. ये केते बोले हमर 12 वीक्स रे हमर कोन न्यूट्रिशन वेस्ट प्रोडक्ट सब ड्यूरिंग प्लासेंटा टू मदर को आमर सब न्यूट्रिशन किंबा किछ वेस्ट प्रोडक्ट सब कोन एक्सचेंज होता है. देन which gland is responsible for initial menstrual cycle को gland नामर hypothalamus. When is the best time to achieve pregnancy को टाइम रे बेस्ट टाइम तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी टाइम पीरियड केते ना 14 डे आफ्टर द being the next period. Then the most common cause of abortion in the first trimester is called आमर कौन क्रोमोसोमा एबनॉर्मालिटी आमर देखा जिवो. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नीड टू बी स्टार्ट केबे हम स्टार्ट करिबा ना 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन सरला परे 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन हम स्टार्ट करबा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग antiretroviral drugs can be given during pregnancy cannot given during को आमर टीबी ड्रगटा प्रेगनेंसी टाइम रे आमर कंट्रा इंडिकेटर कौन ना आमर स्ट्रेप्टोमाइसिन. Then the nurse is providing teaching session to a client who has ulcerative colitis. The nurse instruct the client for को डाइट आम देबा ना आमर हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट. कौन देबा हमें लो फाइबर डाइट एवं लो
residue. Then 97. The patient complaint of the patient complaint pain has redness, swelling and IBS. कौन कौन देखा जाए ना पेन रेडनेस एवं स्वेलिंग इन द आईबीएस तो कौन करिबा हमें स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव द कानुला देन फिजिशियन ऑर्डर एज वेल एज nasal suction a client you should be suction fast जदि गोटे आम ऑर्डर है कौन नाजाल सक्शन करने ताहले आम फास्ट कौन सक्शन करवा माउथ नोज whether section is less or where secretion is more the correct answer is number कौन माउथ एटी कौन गोटे पेशेंट रिसीव डेक्सामेथासोन इंट्रावेनसली ऑर्डर केते आमर 7.6 mg द ड्रग कंसंट्रेशन भाइल केते आमर 4 mg तो आमर कौन आंसर पुट अप कर देबा तो अवेलेबल केते 7.6 आम केते अच्छी केते 4 mg तो केते हेबो 76 by 4 into 1 equal to 1.9 ml आउटे कहला रिसीव के 500 ml टोटल केते हमर 500 ml टाइम दीजिए केते 12 घंटा बट क्वेश्चन आंसर इन मिनट रे तो हमें कन्वर्ट करवा मिनट को 12 आवर इन मिनट को कले केते हेबो ना 12/60 मिनिट तो एटा सॉल्व कले केते हेबो 500 * 60/12 ड्रॉप फैक्टर पे पुणी केते दीचे सॉरी इनटू ड्रॉप फैक्टर 60 तो 60 देला इनटू केते 60 60 कैंसिल 12 रो धा 6 पहला 250 6 जाओ 24 है मतलब 41.6 से लेके दे हमर पाखापाखी 42 ड्रॉप पर मिनट को आसीबा तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर then if a client nurse prepare administer a member measles mumps rubella vaccine at the 5-year-old child then the nurse administer in the vaccine केमिति एडमिनिस्टर करिबा नाम कोन सबक्यूटानियस रूट कोन नाम सबक्यूटानियस नाम then 93 रे कोन कहला a patient come to the clinic with the bleeding nose which of the following instruction in the client most appropriate कोन नाम पेशेंट जिते नोज एपिस्टैटिक्स नोज ब्लीडिंग माने कोन नाम एपिस्टैटिक्स कहबा तो केमती सीट ऑफ द हेड टिल फॉरवर्ड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर then 94 the sequence of administer method of anesthesia in ECTE कौन नाम ऑप्शन ए एट्रोपिन देन आम कौन पेंटन देन 95 a 20-year-old female complains sudden onset of palpitation and appearance she will sweating for 10 minutes and fear then impending to death then diagnosis is कौन hysteria sexual febrility general anxiety and the panic attack option D is the panic attack यदि pregnant woman who was 4 months pregnant asked how much and how type of exercise should be get during the pregnancy कौन आम
कौन कहवा ना आमर वॉक 10 to 15 minutes daily for gradual increase in time. Then appropriate time for TT immunization pregnant women. जदि गोटे पेशेंट प्रेग्नेंट होती ताहले आम एप्रोप्रिएट टाइम फॉर टीटी केते बेले देबा को टाइम रे ना द फास्ट कांटेक्ट आर अर्ली possible in the pregnancy. Then 98 following DPT immunization, a child develops swelling, tenderness, and the injection site ever low grade fever देखागला एवं mileage. Then what is appropriate nursing reaction? कौन देबा नामा in future avoid to DPT injection in the children. जेहेतु immunization से children कौन देखागला हमरो swelling, tenderness, injection site DPT नहीं ताहले in future रे हमने इंजेक्शन को एवॉइड करबा एगेन देबा पे हमरो डीपीटी. The first thing that nurse must ensure when the baby head is come out. जदि baby head टा come out ताहले हम कोन nurse ensure हेबा the cord is intact, the cord is still attached to the placenta, no part of cord is encircle baby neck, the cord is still pulsing, and the correct answer is option B. Then 100 onset of true labor pain, full dilation cervix amara कौन onset of true labor pain, fulfill the dilation the cervix indicate कौन indicate करता है first stage of labor, second stage, third stage और fourth stage of labor. तो यहाँ आम आपण मान क्वेश्चन रहा तो आंसर आप कमेंट माध्यम जणाबे. तो onset of true labor pain with full dilation है कौन कोटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहबा, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर और फोर्थ स्टेजेस ऑफ लेबर. तो आपण मन सेशनटा केमती लागिला कमेंट मध्ये निश्चय आपण मतामत देबे. तो एतिकी आम बंद करियो हमनो लाइव सेशन क्लास. थैंक यू फॉर देन आम नेक्स्ट क्लास रे आउटे नुआ टॉपिक ने वेलकम.